Bismillahirrahmanirrahim. Any questions from yesterday, Beta? Before moving into next class, if you have any questions, Kapil Dev, Danish, Hafiz Anas, Amar, any questions? Okay, yesterday we started FIR filter design, and we said that we have two methods. One is the Windows method, and the second one is optimum filter design method. And in this course, uh, we will be concentrating on Windows method. And how we can do it, we start with the desired frequency response, HDF omega. Like if we are interested in uh, suppose low pass filter, so that should be my desired response. Of course this is ideal, and I cannot uh, get it, but that's my desired response. And I compute the inverse DTFT, which is an infinitely long impulse response from minus infinity to infinity, the sinc function, the samples of the sinc function. And then I will be multiplying that HD of n, which is this infinitely uh, uh, long impulse response, with the window function to get the final filter. Suppose this is my window, rectangular window of length 1, जिसकी height है वो 1 है. तो in that case when this would be multiplied, so अगर इसकी length 7 है तो we will be getting the length of our h of n, that would be equal to 7, because rest of the samples will be clipped. And therefore the final filter will have the finite impulse response, and finite length window function is used to truncate the infinite impulse response of the desired filter. So we have a finite length window. Here we have used a window length of 7 of height 1, and that is being multiplied with this sample to sample multiplication with this with these samples of the infinitely long impulse response of our desired desired frequency response, and as a result of that we are getting finite impulse response filter. So whatever the length of the window is, our final filter will be having the same length of the impulse response. Then we did this example which is about the high pass filter, and that's the desired frequency response of the high pass filter. The black line is showing that this is the area of interest, and these red lines are showing that these are in fact are present there as a symmetric case. They are present there, and HD of omega is equal to HM of omega exponential j beta minus alpha omega. Why I have written it? Because when I'm making this filter through Windows method FIR filter, why not to make the linear phase filter? So linear phase filter के साथ we can have type 1, type 2, type 3 and type 4 filter, and type 1 is the only type which can have high pass, low pass, and band stop filters. So therefore we are concentrating on type 1 filter where beta is equal to 0. So as a result of that, this equation will be turned into this form: HD of omega is equal to HM of omega exponential minus j alpha omega, because beta is equal to 0. And we know that alpha is the center of symmetry, the group delay, the delay, all these definitions we have already talked about. And alpha is equal to n minus 1 over 2, where n is the number of samples in our finite length filter. So if we take this HDF omega, so HDF omega is actually 1 between omega is pi minus omega c to pi plus omega c, and 0 otherwise. और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकता हूँ. अगर मैं इसे HDF omega generalized expression की term से start करना चाहूँ, I can start from there as well. I can write this, that because HM of omega, which is the magnitude, that is equal to 1, so the desired frequency response can be written in this form. When you will be starting with 1, you can start it with 1 as well. So when you will be starting with 1 and taking the inverse discrete time Fourier transform and end up with the impulse response function, that would be a 0 phase response. But when you will be
starting with this exponential minus j omega function and calculating the inverse discrete time Fourier transform, you will end up with this inclusion of this alpha, which is ensuring that the final filter will be a linear phase filter. We did this. So HD of omega, we started with exponential minus j alpha omega, and to get HD of n, we passed it through our block, which is the IDFT block, pi minus omega c to pi plus omega c. These are the limits. Exponential minus j omega alpha is the frequency response, and exponential j omega and d omega, they are coming from the definition of the IDFT formula. And after doing all this, we end up with this expression. HD of n is equal to minus 1 n minus alpha pi over pi n minus alpha sine omega c n minus alpha. And then you will be, as it is given that you have to work for n is equal to 7, so you will be using n is equal to 7. This would give n alpha is equal to 3, which is here, the center of symmetry. And so you will be using different values of n for nd of z, hd of 0, hd of 1, hd of 2. In fact, you can start for hd of n, you will be starting from minus infinity to infinity. But in fact, as you are using w of n of length 7, so therefore you only need to calculate 7 values, because otherwise all the other values will be clipped or truncated. So you don't need to calculate more values than 7. So you will be starting from 0, 1, 2, 3, putting all these values till 6, and this is the impulse response, truncated impulse response of your h of n, which is this thing. And we said that it is linear. Why it is linear? Because it is showing us the symmetry. It is type 1. Type 1, it has odd number of taps in that. Is it zero phase? No, it's not zero phase, because it's not symmetric about 0. It is symmetric about alpha. So it's a linear phase filter. Any questions? Kapil? जी सर। जी बेटा, any questions? नहीं सर, रिवाइज करूंगा लेक्चर सर, फिर नेक्स्ट वीक सर। ये मैंने रिवाइज ही करवाया है बेटा। जी सर, मैं सुन ही रहा था सर, मतलब मैं कह रहा था पूरा सिलेबस रिवाइज होगा सर नेक्स्ट वीक। सर मैंने आपको एक इनबॉक्स में मैसेज भी किया था, आपने देखा था सर? जी मैंने देखा। एकेडमिक प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है बच्चा। आप बुक का क्वेश्चन उठा के कह रहे हैं कि इसमें जी इनवर्स होना चाहिए, तो एकेडमिकली तो कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह से भी जी सर। फेस किया अच्छा जा सर, वो सकता क्वेश्चन ठीक है मतलब? है। जी जी ठीक है। अच्छा। ओके जी, so that's your FIR filter design, the expression for HDFN, and finally you have obtained these sample values for HFN after multiplying HDFN with your finite length window of n is equal to 7. Now let's talk about the frequency response of our desired filter. So the how the frequency response of the desired filter. But before moving further, I would like to do another example. Okay, and that is that I'm interested in designing a low pass filter. So that's my low pass filter. Okay, that's my desired response. Yeah, it's pi over 3. Suppose that's minus pi over 3, and HD of omega will be equal to 1. Omega is between 0 and pi over 3, 0, otherwise. Now you can see that I'm not starting with exponential minus j alpha omega kind of thing. Okay.
you will be watching that the resultant filter will be a zero phase filter. Okay, and we are given that n is equal to 9. It means the window length will be 9, and as a result of that the final impulse response will be of length 9. So the first step is that we have hd of omega and we have to get hd of n, which is the impulse response of the desired filter, and hd of n is equal to 1 over 2 pi minus pi over 3 to pi over 3, and hd of omega exponential j omega n d omega. Now this hd of omega is equal to 1. So as a result of that, it is 1 over 2 pi minus pi over 3 to pi over 3 exponential j omega n d omega. This integration you have been doing so many times. So that's equal to 1 over 2 pi exponential j omega n divided by jn, and the limits are minus pi over 3 to pi over 3, and finally you will be getting 1 over 2 pi jn. This jn is included with this term, and that's equal to exponential jn pi over 3 minus exponential minus jn pi over 3 divided by, that's included here, 2 jn pi में include हो गया, and as finally you will be getting your hd of n as 1 over n pi into sine n pi by 3, and hd of n, it's a kind of sinc function. It's 1 over 3 for n is equal to 0, and sine n pi over 3 divided by n pi, the whole expression for n not equal to 0. So इसका मतलब है we will be having a sinc type. So the samples you will be getting something like that. These are the samples. This is 1 over 3. This is 1 over 3, and the rest are lesser values. Now for linear phase, now you can see 0, 1, 2, and minus 1, minus 2, something like that. And this is symmetric about 0. And if you clip it, you will be watching. So ht of 0, if I write the values, hd of 0, this expression, that is 0.333, this is 1 over 3. hd of 1, you will be placing just n is equal to 1 in this expression, and you will be getting 3 under root over 2 pi hd of 2, that is equal to 3 under root over 4 pi hd of 3, that's equal to 0, and hd of 4 is equal to minus 3 under root over 8 pi. So these are giving you the values 0, 1, 2, 3, and 4. So they are giving you these values, and you know that because of the symmetry you will be having the same values here as well. So we have 5 values over here, but we are given n is equal to 7. So what will be our linear phase filter? Because let's write hd of n sample values like here. At 0 you have this thing,
0.33, so 0. At 1 you have, suppose, 3 under root over 2 pi. At 2 you have 3 under root over 4 pi, and at 3 you have 0, and similar values will be obtained here as well. 0, so it's -1, -2, -3, and there is one more value at 4. This is -3 under root over 8 pi, and similar you have one value over here as well. That's sample number -4. Now you have a window which is of length, so you have samples 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, -1, -2, -3, -4, something like that, very badly. Okay. That's my window function. So 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. In fact, window length जो थी वो हमारी 7 थी. So that's my window of length 7. So sample by sample multiplication will be done with this HD of n. That's my W of n. And Sir, as a window result of length. window length 9 थी. Yes, sir. Okay, then we place it here as well. Okay, ये 1 हो गया, तो you will be multiplying this. There are other samples as well. There will be other samples as well, but these samples will be truncated because the window length is 0, and when the 0 will be multiplied with the samples, you will be getting, of course, 0. So you will be getting these 9 non-zero samples of your HFN, because HFN is equal to HD of n multiplied with W of n. So when this sinc function is multiplied with this window of length 9 of height and height 1, so you will be getting this thing. But that response is 0 phase. To make it linear phase, you will bring alpha, which is n minus 1 over 2. What is n? N is equal to, जी n क्या है? 9. 9. So 9 minus 1 divided by 2, that is equal to 4. So as a result of that, your final filter will be having samples. So now that will come at 4. So 0.33 जो है, जो initially 0 पे रखा हुआ है, अब वो 4 पे आ जाएगा. And then you will be having the samples 5 पे, 6 पे, 7 sample 0 है, 8 sample minus में है. Okay, and similar here as well, and that's equal to 3, 2, 1 and 0, and now this is your linear phase filter. Had I started it with this expression with the alpha exponential minus j alpha omega, in that case this linear phase characteristic would have inherently be incorporated in this expression of HD of n, and you would have obtained a linear phase filter. In that case, HD of 4 would have been 0.333 because alpha would have been included in this expression. Any questions? जी बेटा, any questions? No, sir. सर ये जो मल्टीप्लिकेशन करवानी है ये आपने लीनियर फेज फिल्टर से करवानी है या सिंबल ये ओमेगा ऑफ n से करवानी है? बेटा मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा बताइएगा. सर आपने जो ये मल्टीप्लिकेशन करवानी है, हाँ, जो आपने ऊपर एक्सप्रेशन लिखा है, यस सर, यहाँ पे ये वाला, दिस वन. यस सर. हाँ, सर इसमें HD ऑफ n हमने वही है ना जो जिसपे 0 पे पड़ी है वैल्यू 0.33, या जो गुड. आपने
गुड वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए बेटा, अगर तो आपने इधर देखते हैं, इस केस में देखते हैं, देखिए आपने नाउ यू हैड स्टार्टेड this expression for high pass filter. We started with exponential minus g alpha omega. We started with a generalized linear phase expression because the magnitude was 1. We were using exponential minus g alpha omega, and as a result what we get this expression. Alpha was incorporated in your hd of n, and as a result of that your sinc function was shifted alpha to the right. ठीक है ना? Because of this thing, Yes, sir. alpha की वजह से ये right पे shift हुआ था, and now your window function should also be shifted to the right in order to get this h of n. But here what we are doing, we have started our expression with not generalized linear phase, rather we have started with the simple one, I mean magnitude response से start किया, and we have ended up with this expression. Now this thing is not including alpha. If it is not including alpha, it means it's a zero phase. It is symmetric about zero. So in that case, your window function is symmetric about zero of length 9. That is symmetric about zero. Your final filter, if you want to make it linear phase, you will have to shift it these many samples, alpha many samples to the right to make it causal and linear phase and stable, all these kind of things. Have I answered your question? Okay, sir. Clear. Okay. Now let's move to the frequency response. Time domain में हमने देख लिया है कि how we can get our filter that we have our desired response. Desired response का we have taken the IDFT, inverse discrete time Fourier transform ले लिया, but of course as our desired response was ideal, so as a result of that हमारा जो IDFT है, HD of n है, that is infinite length का response है वो, and to make that finite we multiply it with a finite length window, and as a result of that we get an FIR filter. अच्छा, अब जरा देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का क्या रोल है और किस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज बिहेविंग। नाउ टाइम डोमेन में आप क्या कर रहे हैं? टाइम डोमेन में आप देख रहे हैं कि h of n is equal to h d of n, which is the impulse response of your desired filter, multiplied with window function, which is w of n. What will happen in the frequency domain? This is h of omega. इसका जो discrete time Fourier transform है, we write it as h of omega. That would be h d of omega, और इसका जो है that is w of omega. And as a result of multiplication in time domain, what will happen? We will be convolving in frequency domain. So h of omega will be equal to h d of omega convolved with h of omega. So that's my convolution operation. Now, अब आपके पास हो क्या रहा है? आपके पास h of omega था, which was this thing. hd of omega, and that was this ideal type filter. Suppose low pass filter की बात हो रही है, और फिर हमारे पास of course these are samples, but I'm not sure. In fact, these are not the samples, these are hd of omega. So this is my w of omega. W of omega is the window function थी आपके पास. जरा थोड़ा सा इसको तवज्जो के साथ देखिएगा. This is my hd of omega, फ्रीक्वेंसी डोमेन की चीज है ये w of omega है, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन की चीज है. कपिल, ये सिंक शेप में क्यों है? सर क्योंकि IDFT लिया है ना इसका सर हमने. W of omega IDTFT होता है, IDFT नहीं होता सर, है. ऊपर वाले का HD of omega का सर लोग HD सिंक of फंक्शन omega, सर. ये W of omega मैंने सिंक शेप बनाया है, क्या रीजन है इसकी? सर सिंक फंक्शन तो सर उसका बनता है ना लो पास का, जब हम इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं सर. हाफिज अनस बैठे हुए हैं?
यस सर, आपने अभी इक्वेशन डिराइव किया, उसके अंदर साइन की वैल्यू आई है, तो इस वजह से ये साइन है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जागते हुए बैठा करो बेटा। मैं इस एक्सप्रेशन को अब देख रहा हूँ, मैं उस एक्सप्रेशन की अब बात भी नहीं कर रहा हूँ। इस सिंक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने W ऑफ ओमेगा का ये W ऑफ n का DTFT है W ऑफ ओमेगा, और मैंने W ऑफ ओमेगा सिंक शेप बनाया है। मैं पूछ रहा हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है? सर क्योंकि वो फाइनाइट था। और सर मैं इसीलिए कह रहा हूँ आंखें खोल के बैठे। दिस इज HDF ओमेगा, इस पे कोई इतराज है? दिस इज एन आइडियल लो पास फिल्टर, कोई इतराज है इस पे? कोई समझ में कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर। अच्छा, विंडो फंक्शन अभी तक हमने क्या यूज किया है टाइम डोमेन में? सर इम्पल्सेस थी, सिंपल इम्पल्सेस थी। विंडो फंक्शन इम्पल्सेस थी। विंडो सर ये फंक्शन क्या? इम्पल्सेस थी। दिस इज माय विंडो फंक्शन, दिस इज माय विंडो फंक्शन। ये विंडो है ना? जी सर। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ये सिंक फंक्शन होगा। चल, मुबारकबाद। दिस इज माय सिंक फंक्शन W ऑफ ओमेगा। सो इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म या IDFT नहीं है। दिस इज अ फ्रीक्वेंसी डोमेन फिगर है जो कि लो पास फिल्टर की है। दैट्स माय डिजायर्ड रिस्पांस, एंड एज कपिल सेड, that's W of omega, which is the discrete time Fourier transform of W of n. As W of n was a rectangular window, therefore we are getting the frequency response of that W of n as this sink shaped function, and we have to convolve this. Remember, we are sitting in frequency domain. अब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। एंड फाइनली किस तरह का एक्सप्रेशन आना चाहिए? क्या आपको इसी तरह की चीज मिलेगी? इन दोनों की कन्वोल्यूशन हो रही है। You are convolving this frequency response with this frequency response. What is what you are expecting? सर आई एम गेसिंग इट के सर ये 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मेरा बेटा, कन्वोल्यूशन क्या चीज होती है? You are taking one signal as it is, you are flipping the other signal, and then you are dragging that signal. यही है ना कन्वोल्यूशन? जी सर। Okay, so the response of your HF omega will be of this type. You will be having something like that. You will be having so actually आप डिजायर्ड रिस्पॉन्स आपका इस तरह की चीज थी कि वो ब्रेक शेप्ड होता, लेकिन इस कन्वोल्यूशन ने उस ब्रेक शेप को, अब ये आपकी ट्रांजिशन विड्थ भी आ गई है। दिस इज योर ट्रांजिशन विड्थ एंड दीज आर द रिपल्स इन पास बैंड, एंड ये रिपल्स आपके स्टॉप बैंड में और पास बैंड में आ गए हैं। इंस्टेड ऑफ दिस brick shaped or no transition width, because of the convolution with this thing, you have obtained this transition width. Any questions, any queries as a result of this convolution and obtaining this? नो सर। Now the transition width, ये जो transition width है आपकी of this final filter, that depends on the main lobe width. जितनी main lobe width आपकी है of the window function, ये उस पे डिपेंड कर रही है transition width, isn't it? जब ये कन्वोल्यूशन होगी, जितनी ज्यादा अगर ये फैट होगी आपकी ट्रांजिशन विड्थ, उतनी ही आपकी ट्रांजिशन विड्थ जो है ये बढ़ती चली जाएगी। ट्रू? यस सर। एंड द रिपल्स इन द फाइनल फिल्टर, ये जो आपको रिपल्स नजर आ रहे हैं बोथ इन द पास बैंड एंड इन द स्टॉप बैंड, दीज रिपल डिपेंड्स ऑन द
these side lobe levels of the frequency, ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी विंडो के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में साइड लोब्स पड़ी हुई हैं, मेन लोब विड्थ तो ये थी, उसके बाद आपके पास साइड लोब्स आ रही हैं, ठीक, तो इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, सो द रिपल्स इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड डिपेंड्स ऑन द साइड लोब लेवल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मेरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, यानी मैंने अगर डिजायर्ड रिस्पॉन्स से शुरू किया था एच डी एफ ओमेगा विच इज ओवर हियर, तो मेरी रिक्वायरमेंट तो यही होनी चाहिए कि जो मेरी ओमेगा सी थी एग्जैक्टली उसी पे मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिले एंड देयर शुड बी नो रिपल्स पास बैंड में और स्टॉप बैंड में एज इट इज हियर, बिकॉज दिस इज आइडियल, दैट्स आइडियल रिस्पॉन्स व्हिच आई वांट टू गेट। ठीक है, तो आइडियल विंडो फंक्शन आपके नजदीक क्या होना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज हो जिसके साथ मैं कन्वॉल्व करूं तो मुझे दोबारा यही मिल जाए। कोई अल्लाह का बंदा है जिसको ये कॉन्सेप्ट हो? हाफिज साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? सर जाग रहा हूँ सर। मेरे सर ये जो आपने ब्लैक लाइन जो डब्ल्यू में आपने लगाई है सर, अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारा जो वो है काफी हद तक उसके बराबर हो सकता है आइडियल लो पास फिल्टर के मुताबिक रिस्पॉन्स। मेरा बेटा ये एक्सप्रेशन है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, because in time domain what you did, you have clipped your HDFN with WFN and obtained HFN. So as a result of that, frequency domain में ये काम होना ही होना है, you cannot avoid this. You will be getting your HF omega, your final filter, which will be equal to HDF omega, which is the desired frequency response, and that would be convolved with the frequency response of the window function, and frequency response of the window function is this. So what should be your ideal window? किस चीज के साथ कन्वॉल्व करूं मैं इस चीज को कि मुझे दोबारा यही मिल जाए? ऐसी कोई चीज देखी है? वो वन के साथ सर इम्पल्स के साथ, impulse के साथ, impulse के साथ, whenever an impulse is convolved with any function, the impulse vanishes and you bring that function back as a result. So वो मेरी आइडियल विंडो होगी। अच्छा, वो मेरी अगर आइडियल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द विंडो होगा, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द विंडो? मेरा बेटा सर अगर ये मेरी इम्पल्स है तो इसका ये अगर मेरा W ऑफ ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, तो व्हाट विल बी द विंडो फंक्शन? W ऑफ n क्या होगा? यार यही इसी को स्क्वीज करते जा रहे हो, इसको जितना तुम स्क्वीज करते जाओगे एज ए रिजल्ट क्या चीज मिलेगी तुम्हें? विंडो लेंथ क्या हो जाएगी? इनवर्स डिस्क्रीट। कितनी लेंथ की सेम विंडो रहेगी। चाहिए? इनफाइनाइट लेंथ की विंडो चाहिए होगी टू गेट दिस मेक ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर आप इम्पल्स बनाना चाहते हैं तो टाइम डोमेन में आपको इनफाइनाइट लेंथ की विंडो चाहिए होगी, और अगर आप इनफाइनाइट लेंथ की विंडो चाह रहे हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यू आर रीचिंग, आप यही इम्पल्स रिस्पॉन्स जो आपका है HDFN उसी को ही उठा लीजिए। सो आपका FIR फिल्टर तो फिर नहीं बनेगा ना। सो प्रैक्टिकली आप जो भी विंडो यूज करेंगे, जैसे ही उसके अंदर कुछ लेंथ आएगी, तो एज a result of that you will be moving from that impulse to this sinc function, जो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो सिंक की तरफ आएगा, और फिर वो सिंक जो है that would be convolved, and as a result of that you will be having this transition width and you will be having the ripples in your pass band and stop band। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये inherited हैं as a result of this convolution। ये convolution होगी
और आपके पास फाइनाइट विंडो लेंथ होगा, फाइनाइट विंडो लेंथ टाइम डोमेन में होगा, तो आपका डब्ल्यू एफ ओमेगा जो है दैट वुड बी हैविंग some shapes like this, and as a result of that you will be getting ripples in your stop band and pass band. इस कन्वोल्यूशन की वजह से, कन्वोल्यूशन ऑफ दिस ब्रिक शेप्ड फंक्शन विद दिस सिंक टाइप फंक्शन, ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज हैं. दिस इज माय डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. This is the frequency response of the window function being used, as the window function was rectangular. So as a result of that, the frequency response of that window function is this sync shape. And as a result of convolving these two things, we are getting this type of thing, जिसके अंदर रिपल्स भी हैं पास बैंड और स्टॉप बैंड में, और जिसके अंदर ये आइडियल चीज जो थी कि आप ट्रांजिशन जो है इमीडिएटली हो रही थी, दैट इज लॉस्ट एज वेल, एंड वी आर गेटिंग द ट्रांजिशन विड्थ फ्रॉम मूविंग फ्रॉम स्टॉप बैंड टू पास बैंड. क्लियर हो गई बात? सर ट्रांजिशन विड्स के बीच में जो सर रिपल्स आ रही हैं सर, वो एग्जैक्टली किसकी वजह से आ रही है सर? जो आपके रिपल्स हैं बोथ इन पास बैंड एंड स्टॉप बैंड, दे आर बिकॉज ऑफ दीज, ये जो आपके पास ये चीज, ये जगह है, इनकी वजह से हैं, जिनको आप साइड लोब्स कहते हैं. और जो आपकी मेन लोब विड्थ है दैट इज क्रिएटिंग दिस थिंग. Have I answered? Yes sir. Any other question? सर तो सेकंड ट्रांजिशन विड्थ कौन क्रिएट कर रहा है, जब सर पहली ट्रांजिशन विड्थ जो है सिंक फंक्शन की जो मैंने दिया है सर, वो क्रिएट कर रहा है. मेरा बेटा कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन है यू टेक दिस फंक्शन एज इट इज, फ्लिप दिस, टेक इट एट माइनस इन्फिनिटी एंड देन स्टार्ट ड्रैगिंग इट. जब पहली दफा ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी तो ये वाली साइड बनेगी, जब ये चीज ओवरलैप होके बाहर निकल रही होगी. एक मिनट, सपोज अब कन्वोल्यूशन हो रही है, ठीक है, अब ये जी सर. मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना, फिर थोड़ी देर के बाद ड्रैग करोगे तो ये आगे लेके जाओगे, फिर आगे लेके जाओगे. जी सर, समझ आ गई सर, समझ आ गई. थैंक यू सर. ठीक है, तो इसी तरह से जब इस तरफ आएगी तो ये वाली साइड जो ट्रांजिशन विड्थ की है, जब वो इधर इधर भी तो आएगी ना. जी सर, बिल्कुल आएगी सर. ठीक है, तो इस वजह से आपके पास ट्रांजिशन विड्थ जो है ये बनेगी. ठीक हो गई बात? जी सर. एनी कंफ्यूजन हाफिज अनस? नो सर. अच्छा, मेरी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? मेरी जो आइडियल के हिसाब से तो मैंने देख लिया दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ आई गो फॉर आइडियल विंडो विच इज एन इम्पल्स, इन दैट केस मेरे पास आइडियल विंडो हुज फोरियर ट्रांसफॉर्म इज इम्पल्स, तो वो आइडियल विंडो जो है उसका इनफाइनाइटली उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, एंड आई विल एंड अप विद एन IIR filter which I don't need because I am interested in FIR filter. सो मैं क्या चाह रहा हूं, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, देखिए मेरे जो ट्रांजिशन विड्थ है मैं इसको छोटा करना चाहता हूं. छोटा किस वजह से? बिकॉज आई वांट टू मेक इट एज क्लोजर टू माय डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ट्रांजिशन विड्थ जितनी कम होगी मैं क्लोज होता जाऊंगा अपने डिजायर्ड रिस्पॉन्स से. एंड द सेकंड थिंग इज आई वांट टू रिड्यूस द रिपल्स. सो डेल्टा ऑफ ओमेगा क्या है? Delta of omega is Ws minus Wp, the transition width. This is my transition width. And I know that is coming from the main lobe. ये मेरी मेन लोब की तरफ से आ रहा है. ये इसकी जो मेन लोब है वो मेरी ट्रांजिशन विड्थ को जनरेट करा रही है. So if I want this transition width to be small, I will be having good main lobe characteristics, or I will be requiring small main lobe width. Okay. And delta P and delta S. Delta P क्या है? पास बैंड रिपल है. डेल्टा S स्टॉप बैंड रिपल है. और मैं इनको भी चाहता हूं कि ये भी मेरे स्मॉल हों. एंड ऑफ कोर्स ये जो चीज है ये एसोसिएटेड है किसके साथ? साइड लोब्स.
साइड लोब्स के साथ। ठीक, तो इसका मतलब है कि मैं एक ऐसी विंडो चाहता हूं जिसका मेन लोब बिहेवियर भी अच्छा हो और साइड लोब बिहेवियर भी अच्छा हो, सो दैट माय फाइनल फिल्टर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डिजायर्ड फिल्टर। चलिए, लेट्स सी वन बाय वन। सो माय इशू वन इज द मेन लोब विड्थ जो है उसकी। सो डेल्टा डब्ल्यू, द ट्रांजिशन विड्थ जो है, दैट इज एसोसिएटेड विद द मेन लोब विड्थ ऑफ द विंडो। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हाउ टू कंट्रोल द मेन लोब विड्थ? यू नो इट, दैट जैसे जैसे विंडो लार्जर होती चली जाएगी टाइम डोमेन में, उतना ही मेरा जो बिहेवियर है मेन लोब का वो स्मॉल होता चला जाएगा। सपोज मेरे पास अगर एक विंडो है, सपोज मेरे पास अगर विंडो है जिसके अंदर सपोज ये सैंपल्स हैं, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वी नो दैट वुड बी अ सिंक फंक्शन। ये मेरे पास विंडो है, W ऑफ n है। इसका जो W of omega होगा, we know that it's a sinc function and it has got some main lobe width and some that's centered here, so that's my W of omega। अच्छा, इसकी जो जितनी ज्यादा सैंपल्स बढ़ते चले जाएंगे W of n के अंदर, इसकी जो मेन लोब विड्थ है वो उतनी ही स्क्वीज होती चली जाएगी। सपोज मैं इसको कह देता हूं दिस इज m, दिस इज माइनस m, or in that case this thing is 2 pi over m plus 1, this is minus 2 pi over m plus 1। जितने ज्यादा सैंपल्स बढ़ते चले जाएंगे m आपके, उतनी ही आपकी विंडो जो है 2 पाई ओवर m प्लस 1 जो है वो आपका जीरो की तरफ खींचता चला जाएगा। सो डेल्टा ऑफ w जो है, जो मेन लोब विड्थ है, that is in fact 4 pi over m plus 1। You can prove it taking the discrete time Fourier transform of that of window function with 2m plus 1 samples. You will end up with this width of this as 4 pi over m plus 1। ठीक है, so larger the window size, smaller will be or narrower will be the main lobe width in the frequency domain। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरी मेन लोब विड्थ जो है वो छोटी हो, सो दैट कि मेरी ट्रांजिशन विड्थ जो है वो छोटी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रांजिशन विड्थ छोटी होनी चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल जब मेन लोब विड्थ छोटी होगी। लेकिन अब हमने देखा कि मेन लोब विड्थ छोटा करने के लिए मुझे विंडो फंक्शंस जो हैं वो बढ़ाने पड़े। विंडो फंक्शन जो है मेरा, उसमें टैप्स बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर मैं उसके अंदर टैप्स बढ़ाता हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स होंगे? फिर प्रॉब्लम्स ये होंगे कि मेरा जो फाइनल फिल्टर है, FIR फिल्टर आया है, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, इट विल बी हैविंग मोर सैंपल्स इन दैट, और उसकी वजह से ज़्यादा डिलेज आएंगे, उसकी वजह से बैटरी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो विंडो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और मेन लोब विड्थ जो है वो भी छोटी हो। ठीक है, तो अब ये एक डायलेमा है जिसको हमें सॉल्व करना है या देखना है। And the second issue is that I have pass band and stop band ripples, and I want these ripples to be as small as possible. And these ripples are associated, as said before, that these ripples are associated with the side lobes of the window frequency response. Okay, we have already talked about that. ये जो side lobes पड़े हुए हैं, ये जो side lobes हैं, ये इनके साथ आपके ripples जो हैं वो associated हैं। We have seen it through a convolution process. Now, how to decrease the side lobes of the window frequency response? In fact, it's the shape of the window. अभी तक हम सिर्फ rectangular window की बात कर रहे थे, और अब हम जा रहे हैं shape of the window की तरफ, because experiments have shown that shape of the window has direct relationship with this side lobe levels, and side lobe levels are directly associated with the ripples, and we want these ripples to be as small as possible. So as a result of that, we conclude that we have to work with the shape of this window. And in back in 60s and 50s, people were working on these window shapes, and they were changing the shape of the window function and length of the and as a result of that they were getting the main lobe width and side lobe amplitude with a varied expression. So let's see. So in those days,
everyone was coming up with different window function. So let's start with the rectangular window function. This is my rectangular window, this one. ये एक rectangular window है, ये W of n, ठीक. W of n is equal to 1, n is between 0 and m, 0 otherwise. इसको आप m को आप n minus 1 भी कह सकते हैं, it's the same thing, ठीक है. So that's my rectangular window. The second window is Bartlett or triangular window. ये आपको नजर आ रही है, this one. W of n is equal to 2n over m. N is between 0 and m over 2. 2 minus 2n over m. N is between m over 2 and m. Of course, these are the samples. Continuous यहाँ पे दिखाए गए, but these are the samples because we are talking about W of n की बात हो रही है. So W of n जो है वो samples हैं. Rectangular में आपके samples जो हैं वो इस तरह से रखे हुए हैं, ये हम देखते आ रहे हैं. Triangular में samples जो हैं वो इस तरह पड़े हुए हैं. So these are, ये मेरी rectangular window हो जाएगी. This is my, ये triangular है, ये rectangular window है. इसी तरह से Henning and Hamming were two scientists. They have come up with these windows. These are the expressions for these windows. Okay, so this is Henning and this one is Hamming, and this is Blackman window. ये जो आपको नजर आ रही है, this one. This one. This is Blackman window. और उसका एक्सप्रेशन जो है वो आपको ये नजर आ रहा है. सो इनफैक्ट अगर आप इन विंडोज को गौर से देखें और फिर उसके बाद लेट्स मूव टू दीज एक्सप्रेशंस. अब देखिए रेक्टेंगुलर विंडो की मेन लोब बिहेवियर देखिए. रेक्टेंगुलर विंडो एंड वन थिंग दैट शुड बी क्लियर दैट द लेंथ ऑफ ऑल द विंडोज इज केप्ट सेम. इन तमाम में अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3, इसको भी हम इसको यूं कर देते हैं. सो 7 लेंथ विंडो की बात अगर हम करें तो ये आपके पास ऊपर रेक्टेंगुलर विंडो आ जाएगी, नीचे आपके पास ट्रायंगुलर विंडो आ जाएगी, इसी तरह से. सो दीज एक्सप्रेशन, दीज फिगर्स फॉर Fourier transform or DTFT of the window functions have been obtained by making your window lengths constant or same. So let's look at the behavior of the rectangular window. अब देखिए rectangular window की main lobe width जो है वो सबसे कम है, और अगर आप गौर से देखें तो साइड लोब लेवल जो है वो सबसे खराब है, इट्स अराउंड -13 dB, और बाकियों का अगर आप देखें तो वो नीचे चले जाते जा रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड दैट अगर हम रेक्टेंगुलर विंडो को यूज करते हैं अपने डिजायर्ड इंपल्स रिस्पॉन्स को क्लिप करने के लिए, तो हमारी ट्रांजिशन विड्थ तो थोड़ी होगी, वी विल बी हैविंग अ स्मॉलर ट्रांजिशन विड्थ, बट आवर रिपल्स जो हैं इन द पास बैंड एंड स्टॉप बैंड विल बी एट हायर लेवल. But if we use Blackman window, the side lobe levels are at -60 dB. So as a result of that, the pass band and stop band ripples will be smaller, but the main lobe width जो है उसकी क्योंकि fatter है, तो as a result of that, you will be having transition width. जब हम clip करेंगे Blackman window के साथ, तो क्योंकि उसका Fourier transform ये है आपके सामने, जिसमें जो मेन लोब विड्थ है वो बहुत ज्यादा फैट है as compared to the rectangular window. So as a result of the convolution with this window frequency response with the desired response, you will be getting your transition width fatter as compared to that of the rectangular windows convolution, उसके frequency response के साथ जब आप convolve करेंगे. So असल वजह क्या है? वजह है ये टेपरिंग इफेक्ट. जब भी आपके पास ये शार्पनेस आती है इस तरह, this is your rectangular window, and as a result of that we are seeing that length जो है वो directly main lobe width के साथ associated है, we have talked about that. लेकिन जो side lobe behavior है that is associated with this tapering effect. जितना ज्यादा smooth effect आएगा window के अंदर,
उतना ही आपका जो साइड लोब बिहेवियर है वो बेहतर होता चला जाएगा, एंड दैट इज शोन हियर। देखिए इसमें जो आपको नजर आ रहा है टेपरिंग इफेक्ट वो सबसे बेहतर है एज कंपेयर टू अदर विंडोज। क्वेश्चंस प्लीज। कपिल देव। सर एक क्वेश्चन है, अगर हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ जाए जो उसकी रिपल्स है और उसमें ट्रांजिशन विड्थ में, तो हम सर इसमें क्या चूज करेंगे? देखिए ये आपका जो विंडो डिजाइन मेथड है दैट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड। यू आर गिवन सर्टेन स्पेक्स, यू स्टार्ट योर विंडो डिजाइन और फिर आप नंबर ऑफ टैब्स के हिसाब से आप देखते हैं, और उसके बाद जब फाइनल फिल्टर बनता है यू अगेन चेक इट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशंस। अगर तो आपको ट्रांजिशन विड्थ में कोई नजर आ रहा है कि मेरी ट्रांजिशन विड्थ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिजायर्ड वन, सो यू स्लाइटली इंक्रीज द लेंथ ऑफ दैट, यू चूज डिफरेंट विंडो फंक्शंस। अगर आपकी ट्रांजिशन विड्थ ठीक है लेकिन या थोड़ी सी ओवरडू कर रही है और आपका रिपल्स जो है वो बढ़े हुए हैं, तो यू कैन चेंज योर विंडो फंक्शन एंड कम अप विद द, सो इट्स अ हिट एंड ट्रायल मेथड। बार बार आपको इस ट्रांजिशन में से गुजरना पड़ता है। यू गो, यू डिजाइन, यू चूज विंडो, यू चूज योर नंबर ऑफ टैब्स एंड देन कम बैक, चेक विद योर रिक्वायर्ड जो आपकी डिजायर्ड रिस्पॉन्स था, and again go back to the design parameters and fine tune that. So it's this kind of thing. So again it's a kludgy method, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि you start with the method और फिर you are sure कि जब आप end करेंगे तो आपको वही desired response जो है जो आप जहाँ से आपने start किया था वो आपको मिल जाएगा। You end up, you look at your response, you compare it with your desired response, and then you fine tune with changing the number of tabs, and selection of the windows can be changed as well, and you end up with some filter. Have I answered your question? Yes sir. Okay. Acha. Now as I said that everyone in that time was coming up with different window function, and none of the window was a final design, because infinitely many windows जो हैं वो पड़ी हुई हैं इस जोन के अंदर। यानी आपके पास अगर मैं कहूँ कि मेरी विंडो है, तो ऑफ कोर्स इस विंडो का अपना एक मेन लोब विड्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसकी अपनी साइड लोब बिहेवियर्स हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक और विंडो बनाना चाहता हूँ इसी उसके अंदर, so this is another window. So everybody was designing his own window, and on the basis of that he was coming up with the different characteristics in frequency domain, and as a result of that वो different requirements जो हैं वो पूरी हो रही थी। So there was one scientist, Mr. Kaiser, who came up with the numerical curve fitting के through numerically उसने कुछ formula जो है वो define किया, and this window function is in fact ये जो उसने window दी है, ये window function जो है of course this is numerical values हैं इसके अंदर। आप W delta of W है, attenuation है, number of tabs हैं, so numerically curve fitting के through उसने ये window बनाई, and we can have any window using Kaiser formula. You can have any window from this rectangular to this Blackman window. You can have anything, and in fact this is another window. ये भी एक window हो सकती है, ये भी एक window हो सकती है, और as a result ये भी एक window हो सकती है, ये भी window हो सकती है। So Kaiser formula जो है ये infinitely many windows जितनी भी हो सकती थी वो infinitely many windows उसने इन तमाम को cater किया है, from rectangular window to the impulse। ये भी एक window है, ठीक है। So उसने तमाम windows को cater किया, but before moving there एक चीज जो हमें, ये प्लॉट्स थे उनके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस थे डिफरेंट विंडो फंक्शन के। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर अ गिवन विंडो साइज, कोई भी विंडो साइज आप लेंगे, चाहे आप 20 साइज लें चाहे आप 200 साइज लें, ठीक है। द रेक्टेंगुलर विंडो गिव्स बेस्ट नैरो मेन लोब विड्थ बिहेवियर एंड वर्स्ट साइड लोब बिहेवियर। दिस वी हैव सीन बेस्ट मेन लोब विड्थ बिहेवियर, and I said that all the window lengths are same. So for a given window size,
the rectangular window gives you the best main lobe behavior and worst side lobe behavior, and the Blackman window gives you worst main lobe width behavior and best side lobe behavior. Got it? So these are width of 4 pi over m plus 1 से लेके 12 pi over m. These are the main lobe width behavior, and this is from side lobe behaviors. अगर आप देखें peak side lobe level, that is from -13 to -57. जो जितना ज्यादा attenuation ज्यादा है, जो आपका main lobe peak side lobe amplitude जिसका सबसे कम है, उसके जो side lobe levels है वो नीचे है, और as a result of that आपका pass band ripples और stop band ripples भी minimum होंगे when you will be comparing it with your when you will be convolving it with your desired frequency response. ठीक है बात ये? ठीक है सर, ब्रेक कर लें? नहीं नहीं, अभी कोई ब्रेक नहीं है, वैसे भी आप सो ही रहे होते हैं, कौन सा इसको खत्म करना है बेटा। अच्छा जी, नाउ दिस इज योर काइजर विंडो, एंड एज आई सेड कि काइजर विंडो जो है वो एक न्यूमेरिकली इवॉल्व्ड टेक्निक है दैट वाज गिवन बाय काइजर, एंड उसने ये जीरोथ ऑर्डर बेसल फंक्शंस को यूज किया और फिर टेलर सीरीज एक्सपेंशन को यूज करते हुए ही केम अप विद दिस फार्मूला। एंड अब अगर आप देखें तो ये न्यूमेरिकली पिछली जो टेक्निक्स थी, जो विंडो फंक्शन टेक्निक्स थी, उनसे बेहतर टेक्निक है जिनसे आप विंडो जो है एक डिजाइन कर सकते हैं। सो डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अब आपके पास स्पेसिफिकेशंस आई हुई हैं, आपका स्टॉप बैंड क्या है, आपका पास बैंड क्या है। सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट योर डेल्टा ऑफ डब्ल्यू। नाउ दिस ए इज एटेन्युएशन फैक्टर -20 log 10 डेल्टा। सो सपोज आपको डेल्टा एस दिया हुआ है, डेल्टा पी दिया हुआ है, सो फ्रॉम देयर यू विल बी गेटिंग द मिनिमम वैल्यू। अगर डेल्टा एस छोटा है तो डेल्टा एस ले लें, डेल्टा पी छोटा है तो डेल्टा पी ले लें, इंक्लूड इट हियर, एंड यू विल बी गेटिंग योर ए विच इज द एटेन्युएशन। एंड फ्रॉम देयर एटेन्युएशन से और आपकी जो साइड ट्रांजिशन विड्थ है, वहां से आप एक m लेंगे कि कितने नंबर ऑफ टैप्स जो हैं वो मुझे चाहिए, एंड दिस बीटा इज नॉट दैट बीटा जो कि आप वहां पे एक्सपोनेंशियल j अल्फा वो इंटरसेप्ट नहीं है, रादर वी विल बी कॉलिंग इट एज बीटा बार। इनफैक्ट ये कंट्रोलिंग पैरामीटर है आपकी विंडो शेप का, and these numbers are indicating that again that this is a numerical technique, और curve fitting के थ्रू जो है ये numbers मिले हैं। Suppose if a is greater than 50, a is what? A is attenuation that is coming from the side lobe levels। ठीक है, ये आपको a नजर आ रहा है इस टेबल के अंदर। Where is a? होना तो चाहिए था। Okay, anyways, it's not there, but beta is there। 0, 1.33, these are the controlling parameters, this beta bar, and that is indicating what will be the shape of the window. Okay, so beta bar is telling you if a is greater than 50, यहाँ से आपने calculate किया, if a is greater than 50, your beta bar will be this thing. If a is between 21 and 50, you will be using this formula to get your beta bar, and if a is lesser than 21, your beta bar is equal to 0. और जैसे जैसे बीटा बढ़ता चला जा रहा है, आपकी टेपरिंग इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। लेट्स सी दिस, बीटा इज इक्वल टू जब 0 है तो आपके पास रेक्टेंगुलर विंडो है। इसको देख लें, काइजर विंडो फॉर बीटा इज इक्वल टू 0, 3 एंड 6, ये आपकी फिगर ए में है। 0, 3 एंड 6 के लिए m इज इक्वल टू 20, 21 लेंथ की विंडो है आपके पास। ये बीटा इज इक्वल टू 0 है, दिस रेक्टेंगुलर विंडो। ये बीटा इज इक्वल टू 3 के साथ है, उसके अंदर टेपरिंग इफेक्ट आ गया है, और बीटा इज इक्वल टू 6 के अंदर मजीद टेपरिंग आई है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी शुड एक्सपेक्ट कि इसका जो मेन लोब बिहेवियर होगा वो बेहतर होगा। रेक्टेंगुलर का बीटा इज इक्वल टू 0 का मेन लोब बिहेवियर बेहतर होगा, और बीटा इज इक्वल टू 6 का साइड लोब बिहेवियर जो है वो बेहतर होगा। सो लेट्स लुक एट दैट। बीटा इज इक्वल टू 0 का देखिए ये मेन लोब विड्थ है, the smallest of all, और अगर आप बीटा इज इक्वल टू 6 का मेन लोब बिहेवियर देखिए तो ये मेन लोब बिहेवियर है बीटा इज इक्वल टू 6 का, और ये आपके पास पड़ा हुआ है बीटा इज इक्वल टू 3 का। सो जैसे जैसे टेपरिंग इफेक्ट आ रहा है आपकी विंडो के अंदर, बीटा बार कह लें इसको,
So beta bar is the tapering, giving you the tapering effect in your the smoothness in your window. And as a result of smoothness, ये जो transition के अंदर smoothness आई है, as a result of that frequency response जो है उसके अंदर main lobe behavior जो है वो change हो रहा है. Window function का main lobe behavior सबसे बेहतर है और जो साइड लोब बिहेवियर है वो बीटा इज इक्वल टू 6 का सबसे बेहतर है. जैसे जैसे बीटा बढ़ता चला जाएगा आपका साइड लोब बिहेवियर जो है वो इम्प्रूव करता चला जाएगा. सो लेट्स सी हियर, ये आपका साइड लोब बिहेवियर है, दिस इज एट -13 dB. ये आपका साइड लोब पहली वाली इसका, ये साइड लोब बिहेवियर है आपकी बीटा इज इक्वल टू 3 का. और अगर आप गौर से देखें तो ये आपका बिहेवियर है बीटा इज इक्वल टू 6 का साइड लोब बिहेवियर. और ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम के लिए. सी में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ काइजर विंडो विद बीटा इज इक्वल टू 6. अब एम चेंज किया गया है. अब बीटा इज इक्वल टू 6 में मेन लोब बिहेवियर, ऑफ कोर्स विंडो लेंथ बढ़ती है तो मेन लोब बिहेवियर जो है वो आपका इम्प्रूव करता है. सो एम इज इक्वल टू 10 पे अगर आप देखें तो आपकी मेन लोब बिहेवियर जो है वो ये है. m इज इक्वल टू 20 पे मेन लोब बिहेवियर ये है और m इज इक्वल टू 10 पे आपका 40 पे मेन लोब बिहेवियर जो है वो आपके पास ये है. सो एज यू इंक्रीज द विंडो लेंथ बाय कीपिंग द विंडो कांस्टेंट, अब आपने इसमें m इज बीटा इज इक्वल टू 6 रखा हुआ है तो विंडो जो है वो सेम है. सो वी आर यूजिंग द सेम विंडो बट यस द लेंथ ऑफ द विंडो इज बीइंग चेंज्ड. टेपरिंग इफेक्ट वैसा ही है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग, the main lobe behavior is changing but the side lobe behavior is not changing because that's the characteristic of that tapering. So as a result of that, इस जगह पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखिए और इस जगह पे आपके देखिए तो आपका साइड लोब बिहेवियर जो है वो सेम रह रहा है. क्वेश्चंस प्लीज. समझ आ गई सर? क्या समझ आई है कपिल देव, आज बताना यार. सर इसमें ना जो केसर विंडो है उसमें हमारे पास दो चीजें पैरामीटर्स है, बीटा और एम. एम जो है सर वो है नंबर ऑफ, जो हम नंबर बढ़ा रहे हैं उसका, सैंपल्स तो नहीं कह सकते सर बट लेंथ बढ़ा रहे हैं सर. एंड बीटा में जो है ना सर, हमारे पास ये है कि उसकी जो टेपरिंग है वो कितनी है. टेपरिंग जैसे बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास सर जो उसकी ट्रांजिशन विड्थ है, जो मेन लोब विड्थ है सर, वो कम हो रही है. नहीं, वो तो ज्यादा हो रही है. जो टेपरिंग है उसका मेन जो है इफेक्ट जो है ना वो उसके साइड लूप लेवल्स पे है. एंड ऑफ कोर्स मेन लूप विड्थ भी अपना बिहेवियर चेंज कर रही है. सो मेन लूप विड्थ का बिहेवियर और जो साइड लूप जो आपका बिहेवियर है ये आपकी टेपरिंग इफेक्ट के साथ है. बट जो मेन लूप विड्थ का बिहेवियर है ये फिर लेंथ के साथ भी एसोसिएटेड है. इसको भी जरूर ध्यान में रखना है. ठीक है, जितनी जितनी लेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी उतना आपका फॉर अ गिवन विंडो आपकी जो जो मेन लोब बिहेवियर है वो स्मॉल होता चला जाएगा, मेन लोब विड्थ आपकी कम होती चली जाएगी. बट इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर द लोएस्ट वन कि आपका फॉर अ गिवन विंडो द साइड लोब बिहेवियर इज सेम. चाहे जितनी भी लेंथ आप बढ़ा लें कम कर लें तो जो टेपरिंग इफेक्ट उस विंडो के साथ एसोसिएटेड है वो यहाँ से आपको बता रहा है कि आपका साइड लोब बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है इस टेपरिंग इफेक्ट के साथ. ठीक होगी बात? जी सर बिल्कुल. Now there is one example कि design a low pass filter using Kaiser window design method. The specifications are WP is equal to 0.4 pi, WS is equal to 0.6 pi. किस तरह का फिल्टर है? एक लो पास फिल्टर बनाना है हमने यार. ओके, लो पास फिल्टर है जी. इसमें W पास बैंड जो है वो 0.4 पाई है, फिर उसके बाद 0.6 पाई है आपके पास ये स्टॉप बैंड है. सो किस तरह का फिल्टर आ रहा है मेरे पास? इट इज समथिंग लाइक दैट. और फिर उसके बाद ये सिचुएशन है एंड ये मेरी ट्रांजिशन विड्थ. ठीक हो गया जी? ये मेरा लो पास फिल्टर है और उसने
पास बैंड में जो रिपल है इसको मैग्नीफाई करके देखें तो वो कहता है जी 0.01 है पास बैंड में। WP जो है वो इस रेंज में है। सपोज मैं यहाँ पे अगर बना सकता हूँ तो बना देता हूँ। सपोज ये सिचुएशन है जी, ठीक। ये मेरा पास बैंड रिपल है 0.01 और स्टॉप बैंड रिपल जो है वो उससे भी छोटा है, दैट इज समवेयर ओवर हियर 0.01 है। ठीक हो गई बात, 0.001 है। अच्छा, अब अगर आप अपना फॉर्मूला देखें, जो अपने जो काइजर साहब ने फॉर्मूला दिया था उसमें डेल्टा पी और डेल्टा एस दोनों को अकोमोडेट नहीं किया हुआ, यानी अगेन अभी भी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद थी इसको रिफाइन करने की, बट उसने इसको डेल्टा के साथ एसोसिएट किया। एंड डेल्टा के साथ एसोसिएट करने का मतलब यह है कि आप इनमें से जो भी छोटा है आप उसको पिक करेंगे। इसका मतलब यह है यू विल बी ओवर डूइंग इन योर डिजाइन। डेल्टा पी 0.01 है, डेल्टा एस 0.001 है। विच डेल्टा टू चूज? यू विल बी चूजिंग दिस थिंग एंड इट मीन्स यू आर ओवर डूइंग इन योर पास बैंड, बिकॉज पास बैंड में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो 0.01 थी, बट यू आर चूजिंग दिस थिंग in your formula for calculation of attenuation. So you will be doing overdoing in your pass band. So how you will be calculating? This is your delta W, 0.6 pi minus 0.4 pi, that is 2 pi, 0.2 pi. A is given here minus 20 log 10 delta. You have chosen this delta, which is equal to 3 log 10 of 0.001 is 3, so that is 60. एंड बीटा बार कह लेते हैं इसको। बीटा बार कैसे कैलकुलेट किया है? बीटा बार कैलकुलेट किया है यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज a is greater than 60, so you have used this thing 0.1102 into 60 minus 8.7, and as a result of that you have obtained this beta bar is equal to 5.653, and then you have calculated your m from m कहाँ से कैलकुलेट किया है? These are the number of taps. m plus 1 is the number of taps, that is equal to a minus 8. You know a, that is 60. 8 2.285 into delta w, which is known as well, and as a result of that you have obtained this m is equal to 37. And finally your hfn, the impulse response, will be sine omega c n minus alpha pi n minus alpha. You know that's the same function of your h d of n. ये आपकी विंडो है जो कि इन पैरामीटर से आपने ऑब्टेन की है, और अब आप सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लिकेशन की है and for a window length, and as a result of that you will be getting a filter. And of course the design obtained by Kaiser window will be much better as compared to the windows ये rectangular, Bartlett, Henning, Hamming, Blackman, because that would be a really kludgy method. You will be doing it so many times to get these specifications. बट काइजर ने क्योंकि न्यूमेरिकली कर्व फिटिंग के थ्रू ये कुछ फॉर्मूलाज उसने डिफाइन कर दिए हैं, तो अगेन दिस इज मच बेटर एज कंपेयर टू द प्रीवियसली यूज्ड विंडोज। जी बेटा, क्वेश्चंस? हाँ जी, नो क्वेश्चंस? अच्छा, तो ये जनाब आपका काइजर विंडो डिज़ाइन से आपने जो अपने 38 सैम्पल्स जो हैं m इज इक्वल टू 37 के साथ आपने जो डिज़ाइन किया, सो दिस इज योर फाइनल फिल्टर इम्पल्स रिस्पॉन्स, दैट्स द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। एंड पास बैंड और स्टॉप बैंड में जो रिपल्स हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो स्टॉप बैंड में तो आपकी रिक्वायरमेंट थी कि 0.001 रहे, दैट इज विद इन दैट लिमिट, बट स्टॉप बैंड में आपकी रिक्वायरमेंट थी 0.01, but as I said कि stop band में आपके you are overdoing because here you are using this delta was being chosen as 0.001, so as a result of that you are overdoing in your stop band pass band. अच्छा जी, so ये हम already solve कर चुके हैं। So these are the things जो कि आपको
डिजाइन में यूज आप कर सकते हैं. सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस एग्जांपल जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग विंडो मेथड, काइजर डिजाइन विंडो, so that we should end this chapter and we will be moving to chapter number 8 next time. नो क्वेश्चन सर. क्या फर्क है हाफिज अनस काइजर डिजाइन में और जो प्रीवियसली विंडो डिजाइन मेथड थे? सर ये काइजर डिजाइन जो उससे बेहतर है सर. ये उसमें फार्मूला मिल जाता है और इजी सॉल्व करने में भी इजी है सर. जी उसमें एग्जैक्टली सर आपको जी सर बिल्कुल आप ठीक. असल में ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो काइजर ने आपको डेल्टा ऑफ डब्ल्यू का फार्मूला दे दिया, ए का दे दिया, एम का दे दिया, बीटा बार द ट्यूनिंग पैरामीटर दे दिया, तो ये चीजें आपके पास नॉर्मल विंडो डिजाइन मेथड में नहीं थी. आपको किसी ने कहा कि ये मेरा डेल्टा डब्ल्यू है, सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें, सो डेल्टा डब्ल्यू इज गिवन 0.2 पाई है, और अब मेरे पास इसके अलावा ये डेल्टा पीज हैं. अब ऐसा किसी पिछले डिजाइन मेथड्स में मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं. सो सपोज मैं स्टार्ट करता हूं m इज इक्वल टू 50 सैंपल्स के साथ एंड आई चूज अटेन्युएशन गिवन थी, तो कुछ अटेन्युएशन से अंदाजा लगाते हुए मैंने कहा कि यार डीबी में कैलकुलेट करके एंड आई विल बी चूजिंग सम विंडो फंक्शन. सपोज मैंने कहा मैं हेमिंग विंडो से स्टार्ट कर लेता हूँ. मैंने हेमिंग विंडो से स्टार्ट किया और फाइनल फिल्टर के जब मैंने स्पेक्स देखे और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखा, तो प्रोबेबली दैट वाज ओके इन पास बैंड, लेकिन स्टॉप बैंड में उसके कुछ मसाइल थे, ट्रांजिशन विड्थ का कोई इशू था, और या अटेन्युएशन के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे मिल रहे थे रिपल्स में. तो आई विल बी चेंजिंग माई विंडो, आई विल बी changing the size of the window probably, और इस तरह से मैं फाइन ट्यून करते करते ultimately I will be ending up on these filter specs. But here it is rather more refined method as compared to the previously given methods. So from delta pass band and stop band I have obtained delta W. From the attenuation factor from these pass band and stop band ripples I have obtained this attenuation factor, and from this attenuation factor I have obtained my beta, which is the tuning parameter, the selection of the window, कौन सी window जो है मैं use करूं. So you can see ये of course ये सारी चीज आप एग्जाम में नहीं कर सकते because it's कंप्यूटर पे ही ये बेसल फंक्शंस जो हैं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है ये कैलकुलेट होगी. बट अगेन यू शुड हैव द आइडिया कि किस तरह से आप बीटा बार जो ट्यूनिंग पैरामीटर है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हाउ द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ योर विंडो विल बी कैलकुलेटेड, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जब आप फाइनल एचएफएन देते हैं दैट इज closer to your even better than your requirement. यानी इवन आपने पास बैंड में आपने अलहदा से आपने बेहतर परफॉर्म किया है, बिकॉज अगर तो कोई ऐसा पैरामीटर होता जो कि डेल्टा पी को अलहदा यूज करता और डेल्टा एस को अलहदा यूज करता, इन दैट केस आप शायद exact parameters find out कर सकते थे. But here you are overdoing in your pass band. As a result of there is only one delta, क्योंकि पास बैंड और स्टॉप बैंड को उसने अलहदा से केटर नहीं किया. आप छोटा जो है वो वाला ले लेंगे. अगर आपने 0.01 लिया होता तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप यहाँ पे आपके पास रिजल्ट जो है वो 60 से कम होता, 60 से कम होता, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपका बीटा बार जो है उसके अंदर लेस टेपरिंग होती. लेस टेपरिंग की वजह से आपका जो पास बैंड एंड स्टॉप बैंड रिपल्स हैं वो आपके पास 0.01 के हिसाब से होते और 0.01 के हिसाब से होते, तो आप पास बैंड में तो शायद विद इन द लिमिट्स होते, लेकिन स्टॉप बैंड में आप आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना होती. ठीक है बच्चा? यस सर. ओके, नाउ वी हैव अ क्विज.